Good morning, dear students. This is Kundan Kumar, your English teacher before you. Today I am going to teach you the very important part of writing section, application for a job in letter writing. Okay, students. So let's start with summarizing about this application for a job. Application for a job demands a very formal, precise and to the point treatment. Generally, it is accompanied by a biodata of the applicant. The biodata covers the name, date of birth, present address, marital status, educational qualification, hobbies, experience, salary expected and the references. Employment application news, the letter written for getting a job. It is primary means of introducing the job seeker to the employer. Okay, students, through the job application, job seeker offers his or her labor and services for a return. Therefore, the application for employment acts as a personal advertisement. So, students, application for a job is a very important part of starting a job. And in your syllabus, this is very important part of letter writing. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो नया नया कह सकते हैं कि डिग्री होल्डर है, जिसने कॉलेज पास आउट किया है, डिग्री पास आउट किया है, उसे जॉब की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे ये स्किल आनी बहुत ज़रूरी होती है. ओके स्टूडेंट्स, this is the long composition in your course and you have to write it in a letter writing format. Okay students, a job application consists of two parts: the covering letter, appeal, and the biodata or CV or resume. Okay students, so first part is the cover letter. The format for the covering letter is similar to the format of a formal letter. It goes on like sender address, date, receiver's address, subject, salutation. Let's define each and every part of the format of formal letter. First of all, sender address. In sender address, we write the address of an employee who wants to apply for the job. Now the date. Third point is receiver's address. We write the receiver address to whom we are writing an application or a letter. Now the subject. Subject is the very important part of the letter. You can say this is the heading of the whole letter. Okay students, we will discuss all the point. We are applying for which job, the name of the post, in the subject. Now the last part is salutation. Salutation means बच्चों, we just address our superiors with some words like sir, dear sir, respected sir. So these are the salutation word. Okay, now the body of the main part. This is the main content of the letter. It is either divided into 3 paragraphs or 2 paragraphs. 2 paragraphs is the letter is briefer. The tone of the content should be formal. Do not use any flowery language. Means
Don't use a very figurative language, figure of speech in your language. Write everything to the point. Don't write your language just like you are buttering. Okay? Another point to keep in mind is that the letter should be concise and to the point, and always be respectful and considerate in your language. Whenever you will write an application, that must be to the point, that must be concise, and you must show the respect to the next person to whom you are writing the letter, so that he or she can consider your letter, your main body of the letter, of the application. Para 1. Begin the body of the letter by mentioning the source from where you got to know about the job, of information about the job like given in newspaper along with the day, date and advertisement number. Also mention the post you wish to apply. Now the second paragraph. Here you are supposed to offer your candidature by briefing about your qualifications, achievements, previous experiences and your strengths. In other words, this paragraph should be an answer to the question, how are you the perfect candidate for the job? सेकेंड पैराग्राफ में आप उन सारे प्रश्नों का आंसर लिखेंगे कि आप किस प्रकार से इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। अपने आप को आप शो करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अचीवमेंट्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप अपनी सारी बातें इसमें बताएंगे और ये प्रूव करते हुए कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, एक कन्विंसिंग मैनर में आप वो लेटर राइट करोगे। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द लेटर. In this part of the body, you are supposed to make a reference to the photograph, passport sized, biodata or curriculum vitae and other detailed documents that you have enclosed. You can also appeal for a one-on-one interview. Now complimentary clause. When you close the biodata or the letter, you will use some complimentary word, like at the end of your letter we write a complimentary closing like the words yours faithfully or yours sincerely. These words are used. Now at the last, your signature. Biodata refers to a person's life, experience and achievements. It should be representative of all your personal and professional details in a specified format. It is generally divided into 4 parts. First, personal details. Second, qualifications. Third, experience. Fourth, references. These are the 4 parts of a biodata. Now, I am going to tell you the parts of the biodata. What are the important points in the biodata? First of all, name, then father's name, then date of birth, address, age, contact number, email ID, nationality, marital status,
qualification, work experience, achievements, language known, skills, weaknesses, hobbies, references, declarations, date, place and signature. So these are some very important point in biodata. So first of all, name of the candidate, second father's name of the candidate, date of birth must be in expanded manner, address, your permanent address and your residential address. You can add both addresses, your residential address and your another address. Next part is age. What is your age? Contact number, how many contact numbers you have? Email ID, what is your email ID? Your nationality, आप किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो? मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो? क्वालिफिकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशंस को आप बुलेट पॉइंट्स में शो कर सकते हो या आप एक टेबुलर फॉर्म में भी शो कर सकते हो। ओके बच्चों, टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए आपको कुछ सर्टेन पॉइंट्स लिखने होंगे, लाइक name of the board or institution, your class, now the year of the passing, your full marks, obtained marks and your percentage. So these are some important point in tabular form. If you don't want to write in tabular form, you want to write in a bullet form, so give the bullet and start writing about your qualifications. So first of all, you can start with your higher degrees to lower degrees, or you can start from lower degrees to higher degrees. Okay, आप चाहें तो अपनी पहले सबसे ऊपर वाले क्लास को शो कर सकते हैं, जैसे आपने सबसे लास्ट में क्या पास किया, लाइक डिप्लोमा और कोई इंजीनियरिंग, MBBS, व्हाटएवर, B.Ed, और फिर एंड में क्या दिखाओगे? हाई स्कूल। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप नीचे से शुरू कर सकते हो, पहले हाई स्कूल, देन इंटरमीडिएट, then graduation, then post graduation, then any diploma, any course, technical qualifications. Okay students, so these are the point of qualifications. Work experience, where you had been worked, कहाँ आप काम कर चुके हो, कितने साल तक काम किए हो, या आपने किस किस इंस्टीट्यूशन में काम किया है, आप ये शो कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी अचीवमेंट्स को भी बता सकते हो, कि जैसे आप किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते थे, या किसी कराटे, स्पोर्ट, कुंग-फू, व्हाटएवर, आप वो अपने अचीवमेंट्स भी बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो। ओके, एंड स्किल्स, आप में और कौन सी स्किल्स हैं, डिफरेंट टाइप की स्किल्स। वीकनेसेस, आपकी छोटी मोटी कमजोरियां क्या हैं। हॉबीज, हॉबी क्या है आपकी, कुछ लोग की रीडिंग होती है, कुछ लोग की लिसनिंग म्यूजिक होती है, कुछ लोग की प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग दिस, व्हाटएवर। इसके अलावा रेफरेंसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों सिफारिश। आपने जो ये अप्लाई किया है, आप किसका किसका रेफरेंस दोगे, कि जो आपको जानता है। ओके बच्चों, आप उसमें उसी फील्ड के, जिसमें आप जॉब करने जा रहे हो, उसी फील्ड के किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन का नाम दे सकते हो, जिसने आपका रेफरेंस दिया हो, जिसने आपको सपोर्ट किया हो, उसे रेफरेंसेस कहा जाता है।
ओके बच्चों, डिक्लेरेशन में आई हियर बाय, जो मैंने लिखा है वो पूर्णतया सत्य है, इसे डिक्लेरेशन कहा जाता है। एक तरह से इट इज एन ओथ। लास्ट में डेट, कौन से डेट आप अप्लाई कर रहे हो, प्लेस कौन सा है, एंड योर फुल सिग्नेचर। देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब फॉर एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। You are Kamala Rajan. You have seen the advertisement for the post of an English teacher in Ram Public School, Kolkata. Write a letter in response to the advertisement applying for the post. Give your detailed biodata also. Now the answer. First of all, the format. First of all, sender address, date, receiver address, subject and salutation. So 12 Pataliputra Road, Patna, 20 March 2020. The principal, Ram Public School, Kolkata. Subject, application for the post of English teacher. Now salutation word. Sir, in response to your advertisement in the Statesman dated 12 of March 2020, I want to apply for the post of an English teacher, PGT. This is your first paragraph. In the first paragraph, as I told you, आप क्या राइट करोगे कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली, आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली कि किसी स्कूल में एक पोस्ट खाली है, किसके थ्रू आपको मिली। तो आप इसे पूर्णतः कंप्लीटली राइट करोगे कि आपने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली। तो आपने लिखा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट आपका आया था द स्टेट्समैन नाम के न्यूज़पेपर में 12 मार्च 2020 को, ठीक है। और मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप कहां से आपको सूचना मिली, किस डेट को मिली, किस डे को मिली, एंड आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये राइट करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। अब आप अपने चीजों के बारे में बताएंगे, अपनी क्वालिटीज के बारे में बताएंगे कि आप इस जॉब के लिए कैसे परफेक्ट हो, अपनी खूबियों के बारे में बताएंगे। ओके, आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। आई possess good communication skills. If selected, I shall discharge my duties to your entire satisfaction. My biodata is enclosed herewith for your perusal and sympathetic consideration. Yours faithfully, Kamala. This is the first part of the application. Now biodata. Let's start the biodata. I told you your biodata must be a computer format, just like a computer format. Your row and column must be equal and it full of attraction. So first of all, name Kamala Rai, father's name Mr. R.K. Rai, date of birth 23rd Feb 1994, marital status married, gender female, marital status married, permanent address 12 Pataliputra Road, Patna, correspondent address same as given above. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आई टोल्ड यू कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप दो टाइप के लिख सकते हैं, एक तो आप बुलेट पॉइंट्स देकर, दूसरे आप टेबुलर फॉर्म में। तो यहां पे हमने बुलेट पॉइंट्स में शो किया है passed senior secondary from AI CBSE getting 75% marks in 2011। मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप जो अपनी क्वालिफिकेशंस बताओगे,
आप चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता सकते हो, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता सकते हो, ठीक है। ऊपर से नीचे आकर भी बता सकते हो या नीचे से ऊपर जाके बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ नीचे से ऊपर जाया गया है। देखिए, पास सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम AICBSE गेटिंग 75% मार्क्स इन 2011, passed BA honors English from Patna University with 67% in 2014, passed MA English from Patna University with 60% marks in 2016, passed B.Ed from Patna University with 65% marks in 2017. Qualifications. Now experience. 3 years as a TGT teacher in Happy Public School, Patna. Now presently working as a PGT teacher in Happy Public School, Patna, at the same school. Now hobbies: reading and listening music. Language known: Hindi, English and Bengali. Salary expected: PGT grade with allowance. Now references. So how many persons have given your reference? Okay, Sri P.K. Jaiswal, Principal, University College Patna. Sri L.M. Roy, Principal, Happy Public School, Patna. Okay students, now listen carefully. Your biodata must be in a box always, so that it can look attractive. Homework for you given here. You are a commerce graduate from Bombay University. You are seeking for a suitable job. You come across an advertisement in the Times of India inviting fresh graduate to work as salesman in a multinational company. Apply for the said job to box number 4234 C/O, the Times of India, Mumbai. So students, please attempt these questions and attempt the questions of the PDF given in your group. Okay students, thank you very much.